हेलो हेलो हेलो। Now on I'm audible. Okay, so अभी तक हमने देखा है कि हमने डीएसए की एक नई सीरीज स्टार्ट करी जहाँ पर हम बेसिक से एडवांस बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले फ्रॉम स्टार्टिंग टू एरे एंड टिल ग्राफ एंड ट्री। या सो अभी तक हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि एरे क्या होता है। हमने हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था विच वाज एन एरे। देन हमने उसमें देखा कि व्हाट द टाइम लाइक व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन एन एरे। So we have covered addition operation, traversing operation. Okay, so today I will teach you deletion operation, or we can also call it a removal. So deletion operation. Okay, so first let's understand what's the meaning of this deletion operation. Yeah. So deletion मतलब होता है कि सपोज हमें एक array given है. Suppose we have given an array. Okay, it's my bad. No, it's correct. 10, 20, 30, 40 and 50. Now, we want to delete one element from this array. Suppose 0, 1, 2, 3, 4. Suppose we want to delete element which is present at one index, like 20. We want to delete 20 from here. Then if we delete 20, then what happen here? All the element which is present at the right side of this 20, it will come one position into left side. मतलब क्या कि अगर हम इसमें से 20 को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? 20 को कुछ इस तरीके से रिमूव करना है कि 20 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास एरे के अंदर वो सभी के सभी क्या आ जाए लेफ्ट पोजीशन, मतलब वन स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर क्या आ जाए 30 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए 40 आ जाए, यहाँ पर आ जाए 50 एंड लास्ट में क्या रहे यहाँ पर हम स्टोर करा देंगे 0। 0 shows that there is an empty space in our array. So we I taught you that array is like the size of the array is static. We cannot be change its fixed size. Whenever we declare an array, we have to define what the size of the array. So we cannot be change it. If we try to change it, then you know what the result. All the element of the array will be removed. A new object will be created in the memory. So हमने ये सब देख लिया था कि कैसे क्या होता है अगर नया array बनाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब यदि हम एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो एक लास्ट में हमारे पास स्पेस बचना नहीं चाहिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, और उस स्पेस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 0 से। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें एक इंडेक्स वैल्यू गिवन रहेगी और उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है हमें उसको रिमूव करना है और उसके आगे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको वन पोजीशन लेफ्ट साइड क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। दैट्स द ओनली थिंग। ओके, और लास्ट में या जहां पर भी हमारे पास लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा वहां पर हम क्या स्टोर करा देंगे, 0 स्टोर करा देंगे एंड 0 बता देगा कि यस देयर इज एम्प्टी स्पेस इन दिस एरे। ओके, सो वी कैन स्टोर अ न्यू वैल्यू। तो हमने इसके पहले ये देखा था कि कैसे हम एक डेटा को, एक एलिमेंट, एक नए एलिमेंट को एक कोई भी इंडेक्स पे जाके स्टोर करा सकते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक इंडेक्स की मदद से वहां पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सो दैट्स द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। So देखो हमें करना क्या है, सपोज वी हैव गिवन idx is equal to 2. Our task is to remove element which is present at this index. So what's the question? We have to remove this and shift all the element which are forward to this one position left side. So see, we have to shift that element.
तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमारा एक पॉइंटर सपोज करो आई है। हमें क्या करना है, इसके आगे जितने भी एलिमेंट है उनको वन पोजीशन पीछे की तरफ क्या कर देना, शिफ्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे, 40 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, 50 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 50 को हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट वाली पोजीशन अभी एम्प्टी हो जाएंगी, 50 वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसमें हम क्या स्टोर करा देंगे, जीरो स्टोर करा देंगे। अब ये जीरो बताएगा कि यस देयर इज एम्प्टी स्पेस इन दिस एरे एंड वी कैन स्टोर अ न्यू वेरिएबल। सो ये हमारा लॉजिक होने वाला है। तो शिफ्ट कैसे करेंगे, शिफ्ट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लूप चला देंगे फ्रॉम दिस इंडेक्स, जहाँ से हमें क्या करना है, जहाँ से हमें एलिमेंट को शिफ्ट कराना है, जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो मैंने बोला यहाँ से हम एक लूप चला देंगे, एक पॉइंटर का यूज करेंगे ना। हम क्या बोलेंगे, इफ दिस इज अ one index, then what element we are expecting here, we are expecting element which is present at a two index. Then if I is pointing to this one, then what is the index of this two? It is nothing, it is I plus one. So what we need to do, nothing, will just shift, or we can say we'll just get element which is present at I plus one index and we'll put it on we'll put it at a ith index. Every time we have to do this only. Okay. Now ये हम सिंपल से लॉजिक यूज करेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा लॉजिक वर्क करेगा या नहीं करेगा। सी 0 1 2 3 and 4। नाउ सपोज आई इज पॉइंटिंग टू हियर, it will start from I want to delete this 20, then we have to pass index as a 1 because 20 is present at the first index. Now अभी 20 कहाँ पर प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स। तो हम यहाँ से लूप चला देंगे, हमारे जहाँ पर जो भी आईडीएक्स की वैल्यू होगी वहीं से हम क्या करेंगे, एक लूप को स्टार्ट कर देंगे ना। हमारा टास्क क्या था कि आई प्लस वन पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कहाँ पर प्लेस करना है, ith वाली पोजीशन पे। तो देखो आई प्लस वन मतलब क्या, इफ आई इज पॉइंटिंग टू दिस वन, देन व्हाट द एलिमेंट प्रेजेंट एट सेकंड इंडेक्स आई प्लस वन, इट्स 30। देन विल जस्ट टेक इट एंड स्टोर इन दिस पोजीशन ऑफ आई। सो यहाँ पर अब 20 की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। देन आफ्टर डेट व्हाट, विल अपडेट आई बाय वन। सो आई अपडेट हो जाएगा यहाँ से एंड मूव कर जाएगा इधर ना। अगेन द सेम थिंग विल डू हियर, व्हाट्स द एलिमेंट प्रेजेंट एट आई प्लस वन इंडेक्स, एट a 3 index it is 40, then we'll pick this 40 and store in this position of I। so यहाँ पर ये 40, 30 रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे अब, अगेन हम आई को अपडेट करेंगे बाय वन एंड आई यहाँ से मूव कर जाएगा टू द नेक्स्ट इंडेक्स। नाउ हियर 30, इट विल कम टू द थर्ड इंडेक्स। अगेन व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट एट आई प्लस वन, इट इज 50, like before this zero it was 50। so we'll pick this 50 and store it to I। so यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। Now 50 आ गया, we'll update this by 1। We have to run this loop till I minus 1। It means we don't traverse till end, we will only traverse it till n minus 1। It means whatever the length of this array minus 1। Okay, so हम यहाँ पर जैसे ही आएंगे, now we don't have an element present at I plus 1 index, then this time we just break it and at last we'll uh, 0, at last position we'll store 0 here। Hmm. 0 out. So 20 will be removed from this array and all element after 20 will shift one position each side. So that's the logic to remove element, to delete element from an array। now इसको implement कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेथड लिख देते हैं। ओके, सो रिमूव, हम रिमूव नाम की एक मेथड बना देंगे, remove। now in this method we'll have given two thing, remove ele करके हमने एक मेथड बना दी, remove element। now we'll have given idx। so okay, it's on the right pseudo code here। we'll have given idx and array। so यहाँ पर दो चीज given है, the first one is idx, the second one is array। our task is to remove element which is present at this idx from this array। now अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सा, हमने हमने भी लॉजिक देखा था, हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे लूप को रन करना, जो भी हमें इंडेक्स वैल्यू गिवन रहेगी वहीं से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम एक लूप चला देंगे फॉर I start from this idx and until I is less than
equal to n minus 2. Okay, we have to run this loop till here, this till this index. Why? Because if we'll update by 1, and if we'll try to get element which is present at I plus 1, suppose this is I, will I is pointing to the last index, and if this time we'll try to get element which is present at I plus 1 index, then it will nothing. Okay, so we'll get an error which is index out of bound. तो हम इसको कहाँ तक चलाने वाले हैं? हम इसको will run this until n minus 2 only. So हमने लिखा until I is less than equal to n minus 2. We'll run this loop and every time we'll update I by 1. Now here we'll have simple task. We have to pick element from I plus 1 position. So we'll pick ARR of I plus 1, and we'll store it at a ith position. So here we can store it. Now remove. So okay, before that, we want to do one thing, जो भी एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, इस मेथड से रिटर्न करा देंगे. मतलब इट्स अवर टास्क, लाइक try to remove an element, we want what element we have deleted from an array. हमें वो एलिमेंट भी चाहिए जो हमने क्या किया है, डिलीट किया है. रिमूव, वेट, नाउ. सो अब हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा शिफ्टिंग वाला काम है. इससे पहले है ना, यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा लूप जिस जहां से स्टार्ट होगा वहीं से एलिमेंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एक वेल नाम का वेरिएबल लेंगे और इसमें ए आर आर ऑफ आई डी एक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या करा लेंगे, स्टोर करा लेंगे. स्टोर क्यों करा रहे हैं? बिकॉज इफ दिस लूप विल स्टार्ट वंस, देन वॉट एवर द एलिमेंट प्रेजेंट एट दिस आई डी एक्स इट विल बी रिमूव. ओके, इट विल बी ओवर. तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ही एक वेल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, और जैसे ही हमारे हर एक एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, हम यहाँ से लास्ट पोजीशन पे मीन्स ए आर आर ऑफ एन माइनस वन पे स्टोर करा देंगे 0. एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे टू दिस वैल्यू. जो हमने वैल्यू स्टोर करा के रखी है, जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पर क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे. ओके, सो इसको एक बार इम्प्लीमेंट using Java programming language. So let's declare one method here. नहीं, वो वर्क नहीं कर रहा है अभी. Okay, so public static int remove ele is the name of a method. Now first one is index. We'll declare two parameter here. The first one is index. The second one is an array. Now it's very simple. First, we'll store element which is present at this idx in a variable known as val. Then after that, we'll get the element from the which is present at this idx. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में, क्योंकि हमें उसको डिलीट करना है, पहले हम उसको स्टोर करा लेंगे इस val नाम के वेरिएबल के अंदर. ना फाइन. देन आफ्टर दैट व्हाट विल डू, विल रन दिस लूप I from where, from where this I will start, it will start from this idx until I is less than equal n minus 1. So first let's get the size of this array. We'll get size by using a length attribute, sorry, its property. So we'll call it, we'll get by using this length property, uh, n minus 2 and I plus plus. The same logic which I have discussed here, which I explained here, I'm writing same here. Okay, so I'm लिखेंगे ARR of I plus 1. First of all, we'll get a element which is present at I plus 1 index, and we'll get it and store it on ith position. So I. Now, after that, at the last position, if ARR of n at ARR of n minus 1, we'll store 0 here, and we'll return value to this to the method. Now let's declare one array here. Int ARR is equal to 10, 20,
30, 40, 50, 0, and okay, 60. Let's give it, and let's call this method, which is remove element, and will pass index, will also declare one variable, which is idx is equal to okay, we want to delete element which is present at this second index. So this is present at 0 index, this one is at first index, and this one is at second. Okay, so 30 will be removed after execution of this method. Now here will pass idx, and the second one is array. Now this method will also return as a value, so we want to print it on the console, and then we'll traverse this array. So to traverse, I think before that we have one method. Okay, no, we don't have. So हमने देखा था traverse कैसे करेंगे, हम loop चला देंगे until I is less than n, I plus plus, and what is length? It's nothing. It's arr, but we can write it as out. We can also call it system dot out dot println arr of I, uh, to make it more visible. We can do this. Okay, what is this for? This is for traversing. ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये ओनली ट्रैवर्सिंग के लिए है, कि डिलीट होने के बाद हम चाह रहे हैं कि एलिमेंट सच में डिलीट हुआ है हमारे एरे के एरे के अंदर से या नहीं, हमें वो चेक करना है। तो हमने क्या कर दिया, उसको एक बार डिलीट कर दिया है, और यहाँ पर फिर से एक बार ट्रैवर्स कर लेते तो पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रैवर्सिंग में हमारे एक एलिमेंट को क्या करते हैं, विजिट करते हैं एंड उसको फिर प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर वी कैन find out whether this 30 element which is present at the second index will present after will present or not after removal. Okay, now let's run this. Hmm, you can see what's the element present at this second index, it is 30. Now see, if we'll call this method will return 30 here to us. So you can see the method has returned 30 to us. Now then after that, after removal of this 30, when we'll traverse, then you can see what the output after traversing. 30 is not present here. It means 30 is removed from this array. So this is how we can uh, perform, we can implement, we can do deletion operation. Okay. So now let's discuss what the time complexity of this code. Like what the time complexity to remove an element from an array. Now it's very common. Suppose now we have only 5 elements here, right? And we want to remove element which is present at the first index or second index, whatever. So in like we just find out worst case time complexity of any algorithm. Okay, so just assume what's going on. Hmm. Why it is not working properly? Okay, let me open once. Hmm. Now we can find out. We can see time complexity.
वो टच पेड है क्या? हेलो, ये है तुम्हारे पास? उधर देखो ना, उधर काम नहीं कर रहा। ओके, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल बैक। ये काम जरा पता नहीं क्या हो गया। चल नहीं रहा हूँ, हाँ अभी तो चल रहा था बट अभी। ओके नाउ फाइन, वी कैन मैनेज। ओके नाउ we can't manage. Okay, time complexity. So suppose if we have an element, okay, and we have to remove this element which is present at zero index, we have to remove. We have a suppose we have an element and we have to remove element which is present at this zeroth index, or we have to remove first element. Then that time our loop will run for n time. Okay, so we just say time complexity of this code is order of n at first time. Worst case we can say, or first time. There is a technical glitch, I think. Yes. Okay, so I think there is a technical glitch here. Uh, हमने आज देखा कि कैसे हम एक एलिमेंट को फ्रॉम एन एरे डिलीट कर सकते हैं।
ना कल से हम कंटिन्यू करेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट्स द लीनियर सर्च एंड आफ्टर दैट बाइनरी सर्च। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ। सो like on daily basis, in between 5 to 6, yeah, we'll continue this series on this YouTube channel, जहाँ पर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम यहाँ पर डीएसए कवर करने वाले हैं, और आप लोग यहाँ पर डीएसए को पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। विल मीट टुमारो। थैंक यू।